नहीं आ रही है तो ये शुरू किया जाए। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP इस फंडेड इन इंडिया बाय किसके द्वारा फंड किया जाता है? तो लगभग ये सारी चीज़ें वर्ल्ड बैंक फंड करता है। ठीक, मतलब लगभग ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें ही करता है। FAO is a specialized agency of the United Nations responsible for international efforts to defeat hunger and improve agricultural productivity। ठीक, लेकिन ये NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट को नहीं फंड करता है। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट was launched in 1998 by the Indian Council of Agriculture Research and Union Ministry of Agriculture with financial assistance from World Bank. The project aimed to enhance research, technology transfer and farmer linkage. Asian Development ADB primarily fund infrastructure and development project in Asia. United Nations Development Program works on global development program. NATP was designed to improve agricultural research, extension services and farmer scientist linkage. Second phase of NATP, called National Agriculture Innovation Project NAIP, was launched in 2006 with World Bank support to boost innovation in agriculture and agribusiness. ICAR is the nodal agency responsible for implementing NATP. फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र, अच्छा NATP फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन पुडुचेरी। ठीक, 1974 में द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र was established in Puducherry 1974. It was initiative under National Agriculture Research System to promote location-specific agriculture technologies. कृषि विज्ञान केंद्र function under ICAR and focus the technology assessment and refinement and demonstration. As of May 2024, India has 731 कृषि विज्ञान केंद्र working to improve agriculture, horticulture, livestock and fisheries. कृषि विज्ञान केंद्र operate at the district level and are responsible for training farmers, conducting frontline demonstrations and disseminating scientific knowledge. Agricultural Technology Application Research Institute coordinate KVKs at regional level. कौन? Agricultural Technology Application Research Institute, ATARIS, Agricultural Technology Application Research Institute, coordinate KVBs at regional level. With reference to the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, consider the following statement. Under this scheme, farmers will have to pay a uniform premium of 2% for any crop they cultivate in any season of the in the year. क्यों पेमेंट करेंगे वो? नहीं. द स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स. हाँ, ये सही है, बीमा है तो ये कवर करेगा ना. हाँ. Launched in 13 January 2016, replacing National Agricultural Insurance Scheme and modified NAIS. प्रीमियम स्ट्रक्चर क्या है? खरीफ क्रॉप के लिए 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, रबी क्रॉप के लिए 1.5% ऑफ द सम इंश्योर्ड, कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5% ऑफ सम इंश्योर्ड. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट to farmers in case of crop failure, to encourage farmers to adopt modern agricultural practices, to ensure flow of institutional credit to agriculture. The revamped Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was launched from the Kharif 2020 season, allowing states to opt out and make scheme participation voluntary for farmers. 2016 में शुरू हुआ. अभी क्या है? खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर कॉमर्शियल के लिए 5%. क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1985. क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, द फर्स्ट अटेम्प्ट
at crop insurance was made on April 1985, April 1, 1985, when the comprehensive crop insurance scheme was launched during खरीफ सीजन में CCIS comprehensive crop insurance scheme was implemented in collaboration with state governments on a 50-50 cost sharing basis. It covered food crops, oilseeds and annual horticulture crops. NAIS 1999 to 2000 and later PMFBY Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2060 replaced कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1985 में जो आया था. नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999. NAIS was introduced in Rabi 1999 to 2000, replacing comprehensive crop insurance scheme. Implemented by Union Ministry of Agriculture. की फीचर क्या था? Provided financial support to farmers in case of crop failure due to natural calamities, pests and diseases. Extended coverage to खरीफ क्रॉप 2004-05 से खरीफ क्रॉप. Later PMF मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना replaced NAIS as a more farmer friendly and financial sustainable model. In 2013-14 National Crop Insurance Program was launched, incorporating NAIS, modified NAIS and weather based crop insurance scheme and coconut farm insurance scheme. ये सारों को मिला के क्या हुआ? नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम बना. World Bank supports NATP NAIP, focusing on agricultural innovation and research. कृषि विज्ञान केंद्र 731 as of 2024 plays crucial role in agricultural technology dissemination. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 is India's largest crop insurance scheme with a revised version launched in 2020. अब कम्प्रिहेंसिव ये CCIS 1985 में, NAIS 1999 में और PMF प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में. National Agricultural Insurance Scheme was launched in 1999 to 2000. Rabi 1999-2000 replaced the comprehensive crop insurance scheme, which was in operation since 1985. Implemented by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, objective to provide financial protection to farmer against crop losses due to natural calamities, pests and diseases. Premier structure क्या था? Based on actuarial rates but highly subsidized for small and marginal farmers. Actuarial rates क्या होता है? An actuarial rate is an estimate of the expected value of future losses. अच्छा, typically used in insurance and pension calculation based on historical data and risk factor. अच्छा, वो actuarial rate वो होता है जो मतलब ये देखा जाए कि आगे भविष्य में क्या लॉसेस हो सकती हैं. Estimate of future losses generally based on historical data. Actuarial rates, but highly subsidized for small and marginal farmers. Successor scheme modified NAIS 2010 and later Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2016. In which financial year did the Union Budget propose to extend the National Agricultural Insurance Scheme to Kharif crop as well? 2004-05 NAIS के थ्रू.
The Union Budget of 2004-05 extended NIS cover to Kharif crop in addition to Rabi crop. Before 2004-05, NIS was primarily focused on Rabi crop. NIS 1999 में शुरू हुआ था. From 2004-05 onwards, Kharif crops were also included under NIS. Objective expanded financial coverage to all seasonal crops. The scheme was later merged to PM मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, which improved insurance coverage for both Rabi and Kharif season. Weather-based crop insurance scheme was first implemented in Karnataka. अच्छा, weather-based crop insurance scheme Karnataka was first implemented in Karnataka during Kharif 2007 season. ऑब्जेक्टिव क्या था? WBCIS प्रोवाइडेड इंश्योरेंस कवरेज बेस्ड ऑन वेदर पैरामीटर जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा रेदर देन एक्चुअल यील्ड लॉस. ये मतलब वेदर के बेस पे लॉसेस को कवर किया जाता था, ना कि पैदावार कम हुई है कि नहीं कम हुई है. इम्प्लीमेंटेड बाय एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया. Expansion by Kharif 2008, the scheme was expanded to 10 स्टेट. मतलब ये स्कीम फिर 10 स्टेट्स तक और वो हुई. रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2016 में क्या हुआ? फ्रॉम खरीफ 2016 WBCIS was वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम was relaunched in 12 states 2016 में. एंड बाई राबी 2016-17 इट कवर्ड 9 स्टेट्स. ठीक है. 2007 से शुरू हुआ था लगभग. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्षा बीमा रेनफॉल इंश्योरेंस स्कीम. Varsha Bima, the rainfall insurance scheme, is managed by Agricultural Institute Company of India Limited (AICIL). Agriculture Insurance Company of India Limited. The scheme was introduced during 2007 Southwest monsoon period. Weather based crop वर्षा बीमा. अच्छा, ये उसी से रिलेटेड है. वर्षा बीमा was introduced by AICIL to provide insurance against deficit rainfall. बिल्कुल सही है. The scheme was introduced in 2004, not 2007. नहीं, हाँ, ये 2004 में हुआ था. सॉरी. Piloted in Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka and Rajasthan in 2004. Varsha Bima based on rainfall indices rather than actual yield loss. Impact क्या हुआ? Helped mitigate financial distress for farmers dependent on monsoon rainfall. Link with weather based crop insurance 2007 later adopted Varsha Bima's core concept of weather-based risk assessment. Crop insurance is the under the monopoly of किसके मोनोपोली पे है? अभी क्या है? देखिए, नेशनल अभी तो किसी के उसमें नहीं है. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं. जनरल इंश्योरेंस कंपनी नहीं. नाबार्ड प्राइमरली हैंडल्स रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंस, नॉट इंश्योरेंस. तो अभी क्या है? प्रीवियसली AICIL वो करता था, हेल्ड ए मोनोपोली, बट नाउ मल्टीपल कंपनीज आर इन्वॉल्व. देखिए, बिफोर 2002-03 जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैंडल क्रॉप इंश्योरेंस. 2003 के बाद एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया टुक ओवर मोनोपोली राइट्स. लेकिन अभी प्रेजेंट मल्टीपल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इम्पैनल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस.
Consider the following statement. The crop insurance scheme in India was started in 1985. The total number of agroclimatic zones in Uttar Pradesh is 9. Agroclimatic zone, agroeconomic zone. हाँ, दोनों सही है. Comprehensive crop insurance scheme was launched in 1985 as India's first formal crop insurance scheme. Uttar Pradesh has 9 agroclimatic zones which are defined based on soil type, rainfall, temperature and other climate factors. देखिए CCIS 1985, फिर NAIS 1999 to 2000, फिर प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना 2016. So the evolution of crop insurance in India. UP's agro climate zone include Western Plains, Central India, Bundelkhand, Eastern Plains, etc., each with different agricultural condition. Consider the following statement. Food for Work program was started in 1977. Blue Revolution is concerned with mustard production. नहीं भाई. Food for Work program was launched in 1977 as a part of poverty alleviation effort, providing food grains in exchange of labor. A Blue Revolution related to fish production, not mustard. Blue Revolution 1970s to 2000 boosted India's fish production. Fishery sector contributes 1% of India's GDP and provide livelihood to 14 million people. Food for Work program was later merged to National Rural Guarantee Scheme NREGA 2005. NAIS 1999-2000 PMFBY 2016 represent India's crop insurance journey. WBCIS 2007 provide weather-based insurance and was piloted in Karnataka. Varsha Bima 2004 was India's first rainfall इंश्योरेंस स्कीम. वर्षा बीमा 2004 में एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड took over crop insurance monopoly post 2003. Food for Work program 1977 evolved into MNREGA 2005. Blue Revolution fish production. हरियाली योजना ये वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड था. अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा मतलब उनके सरकार में शायद शुरू हुआ था. वाटर मैनेजमेंट हरियाली योजना ये वाटर सेट डेवलपमेंट वाज लॉन्च इन जनवरी 2003 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट के मतलब मिनिस्ट्री भी रूरल डेवलपमेंट थी. इट एम टू वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन, इरिगेशन फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट एंड एफॉरेस्टेशन. वाटर सेट मैनेजमेंट के लिए थी. बजट 2000 करोड़ implemented executed through gram panchayat. Key objective rain water harvesting and conservation, revival of traditional water bodies, afforestation and sustainable rural livelihood. Linked to integrated watershed management program 2011 and Jal Shakti Abhiyan 2019. Haryali is the program associated with a program of support for watershed management. Haryali Yojana is part of watershed management strategy aimed at sustainable water use and conservation. A similar scheme, National Watershed Development Program 1990 to 91, Jal Jeevan Mission 2019, focused on household tap water connection. अटल भूजल योजना फोकस ऑन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. अटल भूजल योजना 2020.
विशेष कृषि उपज योजना इज रिलेटेड टू विशेष कृषि मतलब thrust in export in agricultural products. विशेष कृषि उपज योजना aims to promote agricultural export. विशेष कृषि योजना increasing productivity of crop in drought prone areas encouraged. It does not address drought resilience. विशेष कृषि योजना launched under export import policy 2004-9. विशेष कृषि उपज योजना objective to promote export of fruit, vegetable, flowers, dairy, poultry and minor forest produce. Incentive exporter get due to credit scrips equal to 5% of the free import value of export. Exported get duty credit scrips equal to 5% of free on board value of exports. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स क्या होता है? स्क्रिप्स क्या होता है? स्क्रिप्स स्क्रिप होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ मनी सब्सक्राइब टू ए बैंक और कंपनी entitling the holder to a formal certificate and dividends. ठीक है. Equal to 5% of free on board value of export. विशेष कृषि उपज योजना thrust in export of agricultural product to promote agricultural export. राष्ट्रीय कृषि विशेष कृषि योजना राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना इज मेनली कंसर्न्ड विथ एक्सपोर्टेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. राष्ट्रीय कृषि विशेष कृषि उपज योजना सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. लॉन्च्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ विशेष कृषि उपज योजना सपोर्ट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज aligned with agricultural export policy 2018. The objective of PM कुसुम योजना मतलब to remove farmers dependence on diesel and kerosene and to link pump sets to solar energy. PM कुसुम योजना. The scheme promotes solar power in irrigation. फुल नेम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम. Launched in 2019. Objective 40% of electricity from non-fossil fuel sources by 2030. 3 कंपोनेंट है. कंपोनेंट ए सोलर पावर प्लांट्स ऑन वेस्टलैंड अप टू 2 मेगावाट कैपेसिटी. वेस्टलैंड पे सोलर पावर प्लांट launched in 2019. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम. Launched in 2019. Objective 40% of electricity and component B solarization and standalone agricultural pumps. Grid component C grid connected to solar powered agricultural pumps. सही है. तो यहाँ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं. बाकी कल मिलते हैं. ठीक. बाय.